हेलो एंड वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन हब। आज का वीडियो स्पेशली इज फॉर दोज हु लव द 11th आवर प्रिपरेशन। अब आप ये पूछोगे कि ये 11th आवर प्रिपरेशन क्या है। फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप इंजीनियर हो तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज 11th आवर प्रिपरेशन, बट अगर नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, इंजीनियर्स लोगों की ना एक आदत होती है, दे विल नेवर डू प्री प्रेप्स फॉर एनीथिंग। चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, सबमिशन हो या फिर इंटरव्यू क्यों ना, वो क्या करेंगे, रात को जाग जाग के स्टडी करेंगे। एंड दैट थिंग इज एग्जैक्टली नोन एज द 11th आवर प्रिपरेशन। बट दिस थिंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑल इंजीनियर्स। जो लोग एवरी टाइम प्रिपेयर रहते हैं, प्लीज डोंट फील बैड, बट आई फील देर इज नो बेट फॉर 11th आवर स्टडी। मान के चलो कल आपका इंटरव्यू है या फिर वाइवा है, तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, दे विल लिस्ट आउट सम क्वेश्चंस एंड विल फाइंड टू आंसर दोज। तो वो क्या करेंगे? रेफरेंस बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक देखेंगे, यूट्यूब करेंगे, गूगल करेंगे, बट कैसे भी करके आंसर्स फाइंड करके वही स्टडी करेंगे और इंटरव्यू में या फिर वाइवा में जस्ट फाड़ देंगे। तो इसी में से एक काम मैंने आपका हल्का कर दिया है, एंड दैट इज आई हैव ब्रिंग वन बंच ऑफ द वीडियो विच विल मेनली इंक्लूड द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। तो इसमें क्या होगा कि वॉट एवर वी हैव सीन इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियोज, दैट विल बी रिवाइज्ड in this video. We will quickly review some important topics and the questions and answers of those. And I'm sure this video is going to be very useful for you. Okay, so without any wasting time, let's get started. In previous videos, we have studied the detailed about electronics part, especially the electronic components, electronic gates, and some part of the op-amp. And in this video, we are going to cover some part of those. Okay, so with this note, let's see the first question. As I said, we have seen the electronic components. The first question is, what are active and passive electronic components? So friends, the device which controls or modifies the output of an electronic circuit without playing an active role in it, which is known as the passive devices. And the device that can amplify by producing an output signal with more power than the input signal, it is known as the active component. Let me explain you this in a simple words. Simple words. अभी ये passive component क्या है? ये जो कंपोनेंट्स है वो सिग्नल्स एज इट इज़ पास करते हैं, मैक्सिमम टाइम तो एज इट इज़, समटाइम्स दे मॉडिफाइज इट, बट दे डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल एक्शन ऑन द सिग्नल. Actual actions means they do not amplify the signal or convert it into the another form. No. Yes, sometimes they do, but in special cases, and they require other components to do that. And one more thing, that passive component जो है वो bidirectional होते हैं. अभी bidirection क्या है? जो components electronic current allow करते हैं to flow in both the directions. So the passive components that are the bidirectional components. Now let's understand what are the active components. Active component वो है जो कोई भी सर्किट है उसमें एक्टिव रोल प्ले करेंगे. जैसे कि अगर आपका सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन करना है, सो दैट एक्टिव component will himself perform that amplification action. मोस्टली एक्टिव components क्या करते हैं, जो भी इनपुट सिग्नल है उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके दे विल जनरेट एन आउटपुट सिग्नल विच मेनली कंटेन्स द हाई पावर. दे विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सिग्नल. एंड ये जो एक्टिव सिग्नल्स है
जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो मेनली यूनिडायरेक्शनल होते हैं. The current flowing direction is only one. It means they will take the input signal, they will perform some actions, and they will give just output with the high power in it. Understood? Okay. So there are different components which we can list in passive components and active components. Let's quickly understand what are those. So the components that comes under passive component are mainly resistor, capacitor, inductor, and one more I will add here is a transformer. And the devices which comes under active components are electronic tube, semiconductor devices such as diodes, transistors, FETs, BGT. There are different ICs like op-amp, and many devices which perform some actions on the input signal. Okay, I hope you understand the difference. Okay, so next question is, what is resistor? Everyone had seen this resistor before. Let's understand what resistor exactly means. Let's consider one signal, or you can say charge or current, is flowing through an material or metal wire. In that case, what happens? That material opposes that flow of charge or flow of the current, and this opposing force is known as the resistance of that material. And the passive component which opposes the flow of the current and which mainly has a positive temperature coefficient of the resistance, that device is known as the resistor. Mainly the resistance is measured in the unit of ohms, and the symbol of ohm looks like something the Greek capital letter omega, and ohm is the smallest unit, and other units are kilo ohms, mega ohm, etc. These resistors are mainly made up of tungsten, bronze, consistence, nichrome, eureka, magnesium. Now understand where this resistor is used. Mainly this resistor is used in potential dividers, biasing circuits, feedback networks, amplifiers, current controls, coupling networks, filters, and DC power supplies. It is not a stand-alone device. It is always used with some other components if you want to perform some active action on the signal. Got it? Okay. As you can see in the figure, the resistor looks like something the horizontal plate, and there are some color bands on it, right? And these color bands are not monotonous. There are different colors and different patterns. What these colors exactly means? मैंने आपने अभी देखा कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए समथिंग एक यूनिट है ओम्स, राइट? आई वांट टू ऐड समथिंग हियर दैट every resistor has unique value, and ये जो color bands है that defines the value of that resistor. Now understand how. For calculating the value of the resistors, there is one dedicated chart or table. With the help of that, you can calculate the exact value of the resistor. Okay, अभी स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है. There are multiple colors, there are some bands, and multiply and tolerance. Mainly these columns. तो अभी ये कॉलम का मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. कॉमनली एक रेजिस्टर पे 4 या फिर 5 कलर बैंड्स होते हैं, एंड ईच कलर बैंड हैज इट्स ओन मीनिंग. लेट्स कंसिडर एक रेजिस्टर है जिस पे 4 कलर कोड्स है. तो जो स्टार्टिंग के 3 कलर बैंड्स है, इट विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टर्स, और जो 4th कलर बैंड है, इट विल डिफाइन द टॉलरेंस विच विल बी इन अ परसेंटेज. और ये जो टॉलरेंस का बैंड होता है वो इट विल बी बिट फार फ्रॉम अदर बैंड्स.
जो फर्स्ट 3 बैंड होंगे वो इट विल बी नियर टू ईच अदर एंड द फोर्थ बैंड विल बी बिट फार फ्रॉम देम. ये जो कलर बैंड्स है दे विल ऑलवेज रीड फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड. अभी ये लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा, जैसे कि हमें पता है रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर की कोई पोलैरिटीज़ नहीं होती, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. तो अब ये पहचाने कैसे कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है. तो इट इज़ वेरी इजी. जो भी कलर बैंड्स नियर टू ईच अदर है वो लेफ्ट साइड, और वन बैंड विच विल बी फार फ्रॉम द 3 बैंड्स इट विल बी एट द राइट साइड. ओके okay, we will do one thing. We will calculate the value of one resistors so you will understand it better. Let's consider we have a resistor with the color codes yellow, violet, orange and gold. जैसे कि मैंने पहले बताया है, जो पहले के 3 कलर बैंड्स है it will be the value of that resistance, and the last color it will define the tolerance factor and it will be in a percentage. So according to the table, the yellow color which has value 4 under band 1. Next color is a violet. The violet color has the position 7th in second band. Third one is a orange, and orange value 3. बट फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे याद रखो, अगर ये रजिस्टर में 4 कलर है तो द लास्ट कलर विल बी द योर टॉलरेंस एंड द सेकेंड लास्ट कलर ऑफ एनी रेजिस्टेंस इट विल बी योर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. सो द ऑरेंज कलर वी हैव टू टेक इट एज अ मल्टीप्लिकेशन. सो फ्रॉम द टेबल you can understand that orange color is for 1 kilo ohms. That is why the value that we get from first 2 bands we have to multiply it by 1k, and the last band is our gold. Gold band indicates plus minus 5%. So the final value that we get is 4, 7, 1k and 5%. So if we multiply 47 by 1k, we will get 47k with 5% tolerance. And 47k, it means 47 kilo ohms. You got it? I hope आपको समझ आया होगा. अभी मैं आपको कलर कोड्स दे रही हूँ स्क्रीन पे. Try to calculate the value of this colors and let me know in the comment box. और आप कोई भी डाउट फेस करते हो, let me know, I will help you to solve that. Okay? अभी ये तो हो गया एक मेथड to calculate the resistor value. But friends, there is something else with which we can calculate the value of the resistors. The value of the resistor. Sorry. And comparatively this is the easy method. You don't have to use your intelligence in this. Okay, look at the screen. It is one resistor and let's consider we have to calculate the value of this, or we can say we have to measure the value of this resistor. So for this we use the digital multimeter. अब ये डिजिटल मल्टीमीटर क्यों है और क्या है? Digital multimeter is a multi-performer device which is basically used to measure many things like resistance, current, conductivity of the circuit, etc. etc. अभी के लिए आप इतना समझ लो, हम इसे यूज़ कर रहे हैं कि रेजिस्टर की वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए. तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक डिजिटल मल्टीमीटर लेना है और उसको सेट करना है ओम्स पे. और ये जो मल्टीमीटर है उसकी 2 पोलैरिटीज होती है, वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट जो हमारा रेजिस्टर है उसकी कोई पोलैरिटीज नहीं है. देन यू कैन कनेक्ट एनी ऑफ द टर्मिनल्स टू एनी वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर. इट विल नॉट मैटर. यहाँ पे क्या करना है कि हमारी जो
मल्टीमीटर की जो दो प्रोब्स है that we have to connect it to the two terminals of the resistors, and with this simple way you will directly get the value on the DVM screen. Got it? This is the easiest way. लेकिन अगर ये समझो कि आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर अवेलेबल ही नहीं है, तो दैट टाइम व्हाट यू विल डू, you will refer the color band chart and from that you can calculate the value, and अगर आपके पास DVM available है then you can use it. Okay, so these were the two methods to calculate the resistor value. I hope you have understood. Now move to the next question, and that is classification of the resistor. Okay, look at the screen. The resistor mainly has two classes. First are linear resistors and second is a non-linear resistance. In linear resistance there are two types, again fixed and variable. And again in fixed resistor there are four types, which are carbon composition, thin film, thick film and wire wound. And in variable resistor again three types, which are wire wound, potentiometer, which is known as pot, and trimmer. And under non-linear resistors there are four types, which are thermistor, LDR, photoresistors and varistor. Got it? No complexity. It's a simple classification. Now understand what is linear resistance. In the linear resistors, the current flowing through it is directly proportional to the applied voltage. We can say linear resistance give the steady resistor values, which does not affected by the applied voltage, temperature or the light intensity. Now, these linear resistors again has two types. First is the fixed. The fixed resistors whose the resistance value do not change within the variation of applied voltage, operating temperature and light intensity. Also its fixed resistance value cannot be varied manually as it is fixed resistor. And this fixed resistors has again four types, which are carbon composition, thin film, thick film and wire wound. Okay, so the next linear resistors type is variable. This is the resistor whose resistance value do not change with in the variation in applied voltage, operating temperature and light intensity, but the resistor value can be varied manually, and we can increase the value of that resistor at the highest level value of that particular resistor. And again the variable resistor has three types, which are wire wound, potentiometer and trimmer. फ्रेंड्स, अगर आपने पोटेंशियोमीटर देखा है तो उस पर एक नॉब होता है टू मूव इट, एंड वो नॉब क्या करता है कि उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है. तो इन दिस केस व्हाट वी डू, we increase and decrease the value of that particular resistor in manual mode. So that category comes under the variable resistor. Understood? Okay. अभी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेजिस्टर है, विच इज नॉन लीनियर रेजिस्टर्स. द रेजिस्टर थ्रू विच द करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. हमने अभी देखा जो लीनियर रेजिस्टर्स थे वो उसकी वैल्यू वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, बट अभी जो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स है उसकी वैल्यू और उसका रेजिस्टेंस which will be not proportional to the applied voltage. अभी ये जो non-linear resistors है which are mainly made up of semiconducting materials. अभी ये जो हमने बताया कि the value of the resistance which will be not directly proportional. अभी ये क्यों होता है? ये होता है because the semiconductor material that contains some conducting bonds, and when it comes in a contact
of power or energy, it will breaks, and that is known as the breaking covalent bond. And that is why the variation that comes in the output signal, which is mainly due to the breaking of these covalent bonds, and that is why the signal or the resistance is not directly proportional to the applied voltage. अभी ये सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी पास होती है और जो चार्ज पास होता है वो क्या क्या होता है, मेनली इट विल बी द वोल्टेज, लाइट एंड टेम्परेचर. ओके, ये जो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स है उसके अगेन 4 टाइप्स है: थर्मिस्टर, एलडीआर, फोटो रेजिस्टर्स एंड वायरिस्टर. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द रेजिस्टर्स. अभी यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट्स. कोई भी टर्म हो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बेसिक. अगर आपका कोई भी सिली डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. And also let me know whether this video was useful or not. If it is useful, then please share it with your friends and help them to understand some basic terminologies. I think ये वीडियो अभी बहुत लंबा जा रहा है, being so long. Let's pack it off for this video. Next part we will cover in the next video. तब तक टाटा, bye bye. And don't forget to like, share and subscribe. See you all in the next video. Bye bye.